नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किल से मुश्किल हालात में भी डटे कैसे रहते हैं? आज हम ग्रिट के पीछे छिपे असली स्किल्स को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि जो लोग टॉप पर पहुंचते हैं वो इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। अच्छा, ये सारी बातें आ रही हैं स्टीवन कोटलर की शानदार किताब द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल के 5वें चैप्टर से। तो चलिए सीधे इसी में उतरते हैं। बिना दबाव के हीरे नहीं बनते। ये लाइन तो हम सबने सुनी ही होगी, है ना? अक्सर ग्रिट को बस इसी तरह देखा जाता है कि बस लगे रहो। और देखिए, इसमें सच्चाई है भी। पर यहां एक सवाल उठता है, क्या ग्रिट वाकई में सिर्फ एक ही स्किल है? जब हम किसी को कहते हैं कि वो बहुत ग्रिटी है, तो क्या हम सिर्फ एक ही गुण की बात कर रहे होते हैं? किताब कहती है कि कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। साइकोलॉजिस्ट एंजेला डकवर्थ ने ग्रिट को समझाया है जुनून और दृढ़ता का मेल, यानी पैशन और परसिवरेंस का इंटरसेक्शन। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है, पर जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये पूरी तस्वीर बिल्कुल नहीं है। असल में जो पीक परफॉर्मर्स होते हैं वो सिर्फ जुनून और दृढ़ता के भरोसे नहीं रहते। वो कई अलग अलग तरह के मानसिक कौशलों का, आप कह सकते हैं, एक पूरा सेट इस्तेमाल करते हैं। तो ये परिभाषा सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है, मंजिल नहीं। तो चलिए सबसे पहले ग्रिट के उस हिस्से को समझते हैं जिससे हम सबसे ज्यादा वाकिफ हैं, दृढ़ता, यानी मुश्किलों के बावजूद टिके रहने की वो कमाल की क्षमता। किताब के हिसाब से हमारी रोजमर्रा की जो दृढ़ता है वो 3 चीजों पर टिकी है: हमारी विल पावर, हमारा माइंडसेट और हमारा पैशन। सोचिए, ये तीनों वो इंजन हैं जो हमें मुश्किल हालात में भी आगे धकेलते रहते हैं। यहां पर ना मानसिकता का फर्क समझना बहुत जरूरी है। कैरल ड्वेक की रिसर्च बताती है कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी काबिलियत तय है, बदली नहीं जा सकती। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले मानते हैं कि वो मेहनत से कुछ भी सीख सकते हैं। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? जब कोई मुश्किल आती है ना, तो ग्रोथ माइंडसेट वालों का दिमाग असल में और ज्यादा एक्टिव हो जाता है। वो चैलेंज से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब बात करते हैं इच्छा शक्ति की। इसके बारे में एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, ये अनलिमिटेड नहीं है। बिल्कुल एक बैटरी की तरह है जो दिन भर के छोटे बड़े फैसलों और सेल्फ कंट्रोल से धीरे धीरे खत्म होती जाती है। इसीलिए सिर्फ विल पावर के भरोसे रहना हमेशा काम नहीं आता। और जुनून, अक्सर हमें लगता है कि ये किसी दिन अचानक से मिल जाएगा, किसी बिजली की तरह, पर ऐसा होता नहीं है। असली जुनून एक छोटी सी जिज्ञासा, एक क्यूरियोसिटी से शुरू होता है। जब हम उस पर काम करते हैं और हमें छोटी छोटी सफलताएं मिलती हैं, तो धीरे धीरे वही जुनून की आग बन जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रिट के दूसरे पहलू की। ये पहलू बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर की दुनिया से जुड़ा है। ये अपने विचारों और अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने की क्षमता है। लेखक इसके लिए 3 कमाल के तरीके बताते हैं। पहला, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, मतलब खुद से ऐसी बातें करना जो हिम्मत दें। दूसरा, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, जो हमारे दिमाग को नेगेटिविटी से हटाकर अच्छी चीजों पर फोकस करने की ट्रेनिंग देती है। और तीसरा, माइंडफुलनेस, ये हमें अपने विचारों और उस पर होने वाले रिएक्शन के बीच एक पॉज लेना सिखाती है। अंदाजा लगाइए, एक नेगेटिव विचार के असर को खत्म करने के लिए कितने पॉजिटिव विचारों की जरूरत पड़ती है। बारबरा फ्रेडरिक्सन की रिसर्च के मुताबिक ये रेशियो है 3:1 का। जी हां, हर एक नेगेटिव ख्याल को काटने के लिए 3 पॉजिटिव ख्याल लगते हैं। इससे पता चलता है कि पॉजिटिव रहना कोई किस्मत की बात नहीं बल्कि एक सोचा समझा प्रयास है। डर को समझने के लिए लेखक अपनी एक बहुत मजबूत कहानी शेयर करते हैं। उन्हें दुनिया के सबसे साहसी सफरों में से एक लेयर्ड हैमिल्टन का इंटरव्यू लेना था। और सच तो यह है कि वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे। इंटरव्यू के दौरान वो लेयर्ड के साथ एक जेट स्की पर थे और वो लगभग क्रैश होने ही वाले थे। उस खतरनाक पल के बाद जब लेखक ने अपना डर बताया, तो लेयर्ड ने सिर्फ 2 शब्द कहे, तुम भी। इन 2 शब्दों का मतलब था कि लेयर्ड हैमिल्टन, जिन्हें पूरी दुनिया निडरता का प्रतीक मानती है, उन्हें भी डर लगता है। लेखक को उसी पल में ये बात समझ आ गई। बहादुरी का मतलब डरना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ते जाना है। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उस डर के साथ करते क्या हैं। चलिए अब ग्रिट के उस टाइप पर आते हैं जो हमें अपनी लिमिट्स को पुश करने और प्रेशर में अपना बेस्ट देने में मदद करता है। चेस ग्रैंड मास्टर जोश वेट्सकिन की ये बात बहुत गहरी है। असली परीक्षा तब नहीं होती जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, बल्कि तब होती है जब हालात मुश्किल हों। उस मुश्किल घड़ी में शांत और फोकस बने रहने की जो काबिलियत है ना, वही महान लोगों को दूसरों से अलग करती है। एक मशहूर कहावत है कि प्रेशर में हम अपनी उम्मीदों के लेवल तक नहीं उठते, बल्कि अपनी ट्रेनिंग के लेवल तक गिर जाते हैं।
इसका मतलब साफ है, अपनी ताकत को और मजबूत करने से ज्यादा जरूरी है अपनी कमजोरियों पर काम करना। और ये कमजोरियां 3 तरह की हो सकती हैं। फिजिकल, जैसे स्टैमिना की कमी, इमोशनल, जैसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, या फिर कॉग्निटिव, जैसे किसी बड़ी प्रॉब्लम को पूरी तरह से ना देख पाना। इन सभी पर सोच समझकर काम करने की जरूरत होती है। और अब ग्रिट का वो पहलू जिसे सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है, पर शायद वो सबसे जरूरी है, बर्नआउट से बचने के लिए सही तरीके से रिकवर करने का ग्रिट। देखिए, रिकवरी 2 तरह की होती है, पैसिव और एक्टिव। पैसिव रिकवरी जैसे टीवी देखना, लगता तो है कि आराम दे रही है, पर असल में वो दिमाग को थकाती है। वहीं एक्टिव रिकवरी जैसे वॉक पर जाना आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करती है और आपको सच में रिचार्ज करती है। लंबी रेस के लिए एक्टिव रिकवरी ही इकलौता रास्ता है। तो असरदार रिकवरी के 3 मेन पिलर हैं। पहला, अपनी नींद को सबसे ज्यादा अहमियत देना। दूसरा, शरीर को आराम देने वाली एक्टिविटीज करना, जैसे योग या नेचर में टाइम बिताना। और तीसरा, नियमित रूप से काम से पूरी तरह ब्रेक लेना, ताकि दिमाग और शरीर पूरी तरह से रीसेट हो सकें। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? बस यही कि ग्रिट कोई जादुई चीज नहीं है जो कुछ लोगों में होती है और कुछ में नहीं। ये असल में कई अलग अलग स्किल्स का एक सेट है, और सबसे अच्छी खबर यह है कि इनमें से हर एक स्किल को सीखा जा सकता है, उसे डेवलप किया जा सकता है। द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल पर हमारी इस सीरीज के अगले सफर के लिए हमसे जरूर जुड़ें। All right, welcome. Today we're jumping into Chapter 5 of Stephen Kotler's The Art of Impossible, and we're tackling a big one, grit. You know, it's a word we hear all the time, but it's probably one of the most critical and most misunderstood parts of achieving anything great. You've probably heard this quote before, "No pressure, no diamonds." It's from the philosopher Thomas Carlyle, and man, does it hit the nail on the head. See, excellence always comes with a price tag. And the real test of high performance, it's not that first burst of excitement. Nope. It's the grind. It's about what you do day in and day out, especially when no one's around to cheer you on. And that is exactly where grit enters the picture. Look, motivation is great for getting you off the starting line, but grit, that's a whole different beast. It's the fuel you need to push through years of the hard stuff, the setbacks, the failures, the moments you want to quit. Because let's be real, that initial spark of motivation, it's just not going to be enough for the long haul. Okay, but here's the thing. Most of us get grit completely wrong. We talk about it like it's this magical trait you're just born with, you know? Oh, she's so gritty. But the truth? It's actually way more exciting than that. Grit isn't a single thing, it's a toolkit. A collection of psychological skills that you, yes, you, can actually learn and train. So how do we build this toolkit? Well, here's what we're going to cover. First, the pillars of perseverance. Then we'll talk about taming your inner world and training under pressure. After that, we'll dive into the grit to recover, and finally, wrap it all up with your grit toolkit. Let's do this. All right, first step, let's lay the foundation. When scientists really dig into what persistence means, they find it's not just one big thing. It actually breaks down into 3 core psychological traits. And these 3, they are the absolute bedrock of long-term success. And here they are: willpower, mindset, and passion. Think of it like this. Willpower is your self-control. Mindset is how you see challenges. And passion, that's the deep down why that keeps you going. And the secret sauce here is that you can't just have one. You gotta train all 3. They all work together. Now, let's talk about mindset, because this is fascinating. Thanks to the work of Stanford's Carol Dweck, we know there's a huge difference between a fixed mindset and a growth mindset. If you believe your talent is just fixed, your brain actually dials down its activity when things get tough. But if you have a growth mindset, your brain literally lights up, works harder, and gets smarter. I mean, that shift right there, that changes the entire game. Okay, so once you start working on your mindset, the next battleground is your own head. We're talking about that voice, that constant inner monologue. You know the one. By default, it can be your own worst critic, right? Just feeding you doubt. So to really perform at a high level, you have to learn to tame that inner world. The writer David Foster Wallace just nailed this. He said, "True education isn't about cramming your head with facts. It's about learning how to choose what you pay attention to." That ability to consciously direct your thoughts, well, that's what real freedom looks like. And science shows just how stacked the deck is against us. Check this out.
Researcher Barbara Fredrickson found what's called the positivity ratio. Our brains have this built-in negativity bias. It's an old survival thing. Because of that, it takes 3 positive thoughts to cancel out the impact of just 1 negative thought. Think about that. 3 to 1. It means we can't just be passive. We have to be super intentional about this. So, how do you fight back? One of the best weapons you have is a daily gratitude practice. Seriously, it actually retrains your brain to start looking for the good stuff instead of just scanning for threats. You can do the list method or write out a paragraph like you see here. The amazing part is, in just a few weeks, this simple exercise can literally start to rewire your brain. Mindfulness is another game changer. What it really does is create this tiny little space, a pause between a thought popping into your head and your emotional reaction to it. And in that little gap, that's where you find your freedom. Whether you're focusing on your breath or just watching thoughts float by, it gives you the power to choose how you respond instead of just blindly reacting. All right, so you're working on your inner world. That's huge. But the next step is taking it outside. Because grit isn't just about what happens in your head. It's about how you show up when the pressure is on. This is where we talk about training to master fear and weakness. I love this quote from the ancient Greek poet Archilochus. We don't rise to the level of our expectations, we fall to the level of our training. And what's wild is that modern neuroscience totally backs this up. When you're under stress, your brain doesn't have time to be creative. It just defaults to whatever is most deeply practiced. So what you do under pressure is a direct result of how you trained, not what you wished for. And this leads to a really powerful idea. Think about it. Being your best when you're already worn out and stressed, that is a totally separate skill from performing when you're fresh. It's a skill you have to train on purpose. It means practicing your stuff, whatever it is, when you're already tired. That's how you build resilience. So what about fear? Instead of trying to crush it or run from it, the grittiest people actually learn to befriend it. They notice where they feel it in their body, they get curious, they even change their self-talk from I can't do this because I'm scared to I'm going to do this because I'm scared. You can even practice taking small risks regularly. All of this helps recalibrate your system, turning fear from an enemy into an incredible source of focus. Okay, we've arrived at the last tool in our grit toolkit. And honestly, this might be the most important one of all, and it's the one almost everyone messes up. It's recovery. Because if you don't have the grit to recover properly, all that other hard work is just a fast track to burnout. And we have to be clear, there's a world of difference between passive and active recovery. Plopping on the couch and scrolling on your phone, that's passive. It feels like you're resting, but your brain is still buzzing. Active recovery, on the other hand, is things that actually help your mind and body heal, stuff that flushes out stress hormones and lets your brain truly recharge. So what does a good active recovery plan actually look like? Well, you can break it down into these 3 key areas. First, sleep. It's totally non-negotiable. You got to protect it. Second, some kind of body work, anything that calms your nervous system down. And third, a total reset. That means taking a real break from work every couple of months to avoid frying your circuits. This isn't lazy. This is strategic. It's how you play the long game. Okay, so we've covered a lot of ground. Let's pull this all together. What's the main takeaway here? What does all this mean for you right now? Here it is, the single most important thing to burn into your brain. Grit is not something you're born with. It is not a fixed trait, it is a toolkit. It's a whole system of skills, from your mindset to how you recover, that absolutely anyone can learn, practice, and get better at over time. So that leaves us with one final question for you. Looking at this whole toolkit, which tool are you going to pick up first? Are you going to start a gratitude journal? Maybe try training when you're a little tired? Just pick one. That's all it takes to get started. Hey, thanks so much for diving into this with us. I hope you'll join us for the next explainer in our series on the art of impossible, because next up, we're unpacking another huge piece of the puzzle, creativity. I'll see you then.